Today we'll be studying The Diary of a Young Girl. It's a book written by a young girl by the name of Anne Frank. An extract from this book is included in class 10th NCERT English. तो हमें ये जानना है कि एन फ्रैंक की ये किताब इतनी फेमस क्यों हुई. She was a German born girl. So we need to understand, we need to have a bit of background before we can start studying that extract. अब this is the map of Europe and Germany is situated here. So Anne Frank जर्मनी में पैदा हुई थी. Alongside जर्मनी आपको एक दूसरी कंट्री दिखेगी, दिस इज़ नेदरलैंड्स, और यहाँ पे एम्स्टरडैम है. तो एन फ्रैंक जर्मनी से एम्स्टरडैम चली गई थी. क्यों चली गई थी ये हम आगे स्टडी करते हैं. ए क्वेश्चन फॉर यू इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप. यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ये आपको मुझे बताना है. द स्मॉलेस्ट इज़ वैटिकन सिटी. ऑलराइट, स्मॉलेस्ट इज़ वैटिकन सिटी. ओके, आपको पता होगा दैट वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 के बीच में हुई थी. तो उस वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स थे. सो द टू ग्रुप्स ऑफ नेशंस दैट फॉट द वर्ल्ड वॉर आर नोन एज एक्सिस पावर्स, और एक को बोलते हैं हम एक्सिस पावर्स और दूसरे को बोलते हैं हम एलाइड पावर्स. एलाइड पावर्स. अब ये कौन कौन से कंट्रीज़ थे, एक्सिस पावर्स कौन से कंट्रीज़ हैं, एलाइड पावर्स कौन से कंट्रीज़ हैं. आप ये मैप देखो. इस मैप में जो ब्लू कलर के कंट्रीज़ हैं दोज आर एक्सिस पावर्स, और इसमें मेनली एक तो ये वाला हो गया जर्मनी, द अदर इज़ इटली. राइट, दिस इज़ इटली यहाँ पे, एंड थर्ड इज़ जापान. सो दीज थ्री ऑफ वेदर वे कॉल द एक्सिस पावर्स. ये एक साइड पे थे एक्सिस पावर्स. और हु वर द अलाइड पावर्स. द अलाइड पावर्स, एक तो ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन. सोवियत यूनियन था, ये वाली कंट्री नोन एज सोवियत यूनियन. अभी ये डिसइंटीग्रेट करके रशिया बन गई है. सोवियत यूनियन, USA, United States of America, and the other main country was China. So the red countries were the allied powers. तो इनको हम allied powers कहते हैं. तो ये एक साइड पे थे. So allied powers fought with the Axis powers तो, and in the end allied powers emerged victorious. So जो एन फ्रैंक ने जब डायरी लिखी वो इसी वर्ल्ड वॉर के दरमियान में लिखी है. ओके, व्हाट इज नाजिज्म. अब नाजिज्म क्या होता है. नाजिज्म इज नेशनल सोशलिज्म. सो इट्स एन आइडियोलॉजी और यू कैन से प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद नाजी पार्टी. जर्मनी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे और उससे पहले ही एक पार्टी बनी थी दैट वाज नोन एज द नाजी पार्टी. सो लाइक यू हैव इन इंडिया यू हैव मैनी डिफरेंट पार्टीज. तो जर्मनी में एक पार्टी बनी थी नोन एज द नाजी पार्टी. एंड नाजिज्म इज अ सेट ऑफ आइडियोलॉजीज एसोसिएटेड विद नाजी पार्टी. अब इट्स अ टाइप ऑफ फेसिज्म. CISM. All right, फेसिज्म और नाजिज्म तो इसमें द मेन फीचर्स आर कि इट रिजेक्ट्स, ये क्या रिजेक्ट करती है, इट रिजेक्ट्स लिबरल डेमोक्रेसी. तो ये डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती है, लिबरल डेमोक्रेसी. सो इट डज़ नॉट बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेसी जैसा हमारा सिस्टम है इंडिया में. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट नाजीज डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी. तो ये वोटिंग में भी बिलीव नहीं करते थे, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी बिलीव नहीं करते थे. एंड वन ऑफ द मेन फीचर्स वाज व्हाट इज़ नोन एज एंटी
Semitism. Anti-Semitism refers to hatred against Jews. तो एन फ्रैंक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एन फ्रैंक वॉज अ ज्यू. सो एंटी सेमेटिज्म ये एक नाजी पार्टी की एक आइडियोलॉजी थी. तो ये कहते थे कि ज्यूज़ अच्छे लोग नहीं हैं. सो दे डिड नॉट लाइक द ज्यूज़. एंड नाजी पार्टी के साथ जो लोग थे, दे किल्ड अबाउट 6 मिलियन ज्यूज़. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उन्होंने 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा. इट इज़ अबाउट रफली 2/3 ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन. तो यूरोप की जो टोटल पॉपुलेशन, ज्यूइश पॉपुलेशन है थी, आउट ऑफ दैट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ ज्यूज़ वर किल्ड बाय नाजीज, राइट. एंड हु वॉज द मेन पर्सन who was in charge of the Nazi party? आपने उसका नाम सुना होगा. He was called Hitler. All right. So this is an image, and in this image you can spot Hitler somewhere. This is Hitler, and on the right hand side, this is a photograph of a fascist leader in Italy. तो इसका नाम था Mussolini. All right. Mussolini. तो ये दोनों बिलीव नहीं करते थे डेमोक्रेसी में. ये वन पार्टी सिस्टम चलाते थे. ये बहुत ऑटोक्रेटिक थे. दे वर टायरेंट्स. ऑलराइट. एंड हिटलर किल्ड अबाउट 6 to 10 मिलियन Jews. ऑलराइट. So now we have to study. So how did Hitler kill Jews? What were the methods that were employed by the Nazis to kill Jews? So some of the methods were we concentration camps बनाते थे. So here's an image of laborers who are engaged in the construction of a concentration camp. तो उन्हीं में ये Jews को ले जाते थे, and they used to torture Jews. So these were known as concentration camps. And on the right hand side you have a photograph of gas chambers. तो ये Jews को इन्हीं gas chambers में डाल देते थे, and they used to gas it, resulting in the death of Jews. So these were some very horrendous methods employed by Nazis against Jews. All right. So eventually Germany was defeated in World War II, and Nazi ideology became universally disgraced. And right now it is considered as immoral, evil. तो अभी बहुत कम रेसिस्ट ग्रुप्स हैं जो अपने आप को नियो नाजीज़ बोलते हैं. बहुत कम नियो नाजीज़. एंड देयर इज़ अ क्रैक डाउन इन वेरियस यूरोपियन कंट्रीज ऑन दीज ग्रुप्स. राइट. So here is a photograph of young survivors, young victims you can say, of the Nazi ideology. Right. These are photographs of young Jewish children who were tortured by the Nazis. तो नाजीज़ का मेन जो एलिमेंट्स थे नाजिज़म में, वो था अल्ट्रा नेशनलिज्म. So sacrificing your own interest for the greater good, but in a very bad way. Racism था. So Nazis considered their own race to be superior to other races. तो अपने रेस को ऊंचा मानते थे दूसरे रेस से. The other was xenophobia. So it implies hatred against people of other races and cultures. The other was ableism. Ableism किसको बोलते हैं? That is, you kind of think that people who are, disadvantaged, तो वो those are low class people. So say for example, if you suffer from some disability, so you will be discriminated against. The other were homophobia, anti-Semitism, जिसके बारे में हमने पढ़ा. Alright. अब क्या हुआ था इस टाइम पे? अब एन फ्रैंक की स्टोरी को हम देखते हैं. So there are about 5 main
points in Annie Frank's life. So we'll study what happened. So 12th जून 1942 को एन फ्रैंक को एक डायरी मिली थी. इट वॉज हर 13th बर्थडे. तो ये इसका एन फ्रैंक का 13th बर्थडे था इसके टाइम. तो उसको उस बर्थडे पे एक डायरी मिली थी. सो शी गॉट अ डायरी हियर, राइट. So I'll write she got a diary here. Then on 5th July 1942, Anne Frank की बड़ी बहन, her name was Margaret received an official summons to report to a Nazi work camp in Germany. तो उसकी बहन को बोला गया कि आप नाजी कैंप पे आ जाओ. ठीक है. जब उसको ये बोला गया, on 6th of July 1942 they went into hiding. ठीक है. तो ये छुप गए बिकॉज द नाजीज डिडंट लाइक द ज्यूज, दे यूज्ड टू किल द ज्यूज. सो ये छुप गए. सो दे हिड विद द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ ही. सो द नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ एन फ्रैंक वॉज ऑथो, वॉज द फादर्स नेम, एंड एडिट वॉज द मदर्स नेम. अब ये कहाँ पे छुप गए? ये छुप गए अपने फादर की कंपनी में जो एम्स्टरडैम में थी. तो अपने फादर की कंपनी के रूम्स में छुप गए, सो एज टू एस्केप बीइंग फॉलोड बाय द नाजीज. सो दे रिमेन हिडन फॉर 2 years and 1 month. तो ये 2 साल तक ऐसे ही छुपे रहे. सो 1942 से 1944 तक एन फ्रैंक रिमेन्ड हिडन. Then on August 1944 में they were discovered. तो नाजीज ने अल्टीमेटली इनको ढूंढ लिया. They were discovered and they were deported to Nazi concentration camps. तो इनको concentration camps पे ले जाया गया. All right. So out of 8 people, only Otto Frank, the father, survived. So बाकी सारे लोग जो छुप रहे थे उन सबको नाजीज ने मार दिया. Only Otto Frank, the father, survived. ठीक है. एन वॉज 15 years old when she died. तो ये एन 15 साल की थी जब ये मर गई. एंड शी डाइड इन Bergen-Belsen. सो इट इज़ अ नेम ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. ठीक है. नॉर्दर्न जर्मनी में एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, तो वहीं पे एन फ्रैंक की डेथ हो गई. शी डाइड ऑफ टाइफस. टाइफस इज़ अ टाइप ऑफ फीवर. तो ये टाइफस की वजह से मर गई. राइट. सो अब इस टाइम में, इन 2 सालों में, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ऑलराइट. सो व्हाट डिड शी राइट इन द डायरी? विल स्टडी a brief extract of what she wrote in her diary. Right. Writing a diary is really a strange experience for someone like me. So she says that writing a diary is a very strange experience. I have never written a diary before. तो एक strange, एक novel सी चीज़ है. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो एन फ्रैंक बोल रही है मैंने कभी डायरी नहीं लिखी है, and I've never written it before, so and nobody would be interested. So किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. एक 13 साल की लड़की की स्कूल डायरी पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have even greater need to get all kinds of things off my chest. So she says that it doesn't matter if nobody reads my diary, but it's still I want to write it because there are so many things going on in my mind that I want to write, jot them down on my diary. तो कह रही है कि मुझे I felt the need to write. I felt the need to give a vent to my emotions. So this is a very famous line. Paper has more patience than people. So Anne Frank says that paper has more patience than people. So it means that if you have a conversation with someone and if you tell that someone about different things in your life, तो कभी ना कभी उस इंसान की patience lose out करेगी. So he may feel disinterested in listening to your story. So Anne Frank says, sorry, I said Ayn Rand. Ayn Rand is a Russian novelist. So
Anne Frank says that paper has more patience than people. So whatever you write on the paper, you can continue writing, and paper won't be disinterested with what you write. So yeah. So she says that paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So she says that I'm bored, I'm listless, so she doesn't know whether to stay in her home or go out. तो ये डायरी लिख रही है when she is in hiding, जब ये छुप रही है अपने फादर की कंपनी में. she is evading arrest by the Nazis. ठीक है. तो उस टाइम में ये सोच रही है कि आई शुड स्टार्ट राइटिंग अ डायरी. तो शी गॉट अ डायरी ऑन अ 13th बर्थडे. ठीक है. इट्स अ स्टिफ पैक डायरी, मे बी इट हैज़ अ हार्ड कवर. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So here she makes a revelation that she does not have a friend. She does not have a friend in whom she could confide her secrets. So she has to write a diary. तो जो चीज़ें इसके मन में है, so she needs to write them down on a diary because she doesn't have a real friend. Right? Next. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not, I have loving parents and a 16-year-old sister. So she has parents, she has a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. She says that there are some 30 odd people that she can call friends. She has a 16-year-old sister, इसकी बहन भी है, इसके parents भी हैं. I have a family, loving aunts and a good home. She has aunts as well, she has a good home. Now on the surface, I seem to have everything except my one true friend. She says that on the surface, मतलब इसके पास, she has a large family, she has aunts, she has sister, she has parents, लेकिन फिर भी she does not have that one friend in whom she could, say anything to. She could confide her secrets. She could trust that friend with her secrets. तो कह रही है, except that one true friend. So she is missing that true friend. Anne Frank is a 13-year-old girl, so she's very emotional and she thinks that I have many people at home, but still I need to find that one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I started the diary. She says that Anne Frank says कि मैं बाकी लोगों से भी मिलती हूँ. So we talk about everyday things जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, ordinary things जो हो रहे हैं, लेकिन जो intimate secrets होते हैं वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ बाकी लोगों से. I'm not able to confide in each other. We're not able to confide secrets in each other. So that is why she has started writing the diary. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. So she says that she's not going to write down the diary like we formally do, write down the diary that हमने Tuesday के दिन क्या किया, Wednesday के दिन क्या किया. So there's not a fixed pattern in which she wants to write a diary. She just wants to write in a very random fashion, right? And she has named her diary Kitty. So Kitty is the name of the diary. And what else Anne Frank has written in her diary, we'll study in the next lesson. You can also purchase a copy of the book by Anne Frank and read it in entirety. There is also an animated film on YouTube. You can find it on YouTube. Anne Frank, The Diary of a Young Girl, animated film. तो वो आप देख सकते हो. It'll be very helpful in understanding the life of this 13-year-old girl and her determination in spite of living under such difficult conditions.
राइट, थैंक यू।